এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছে এটা তৃতীয়টো মৃতদেহ আসলতে যি কয়লা খনি আছিল তাৰ পৰা লৈ অহা হৈছে। এনেদৰে আসলে অভিযান চলাই আছে। পুৱাৰ ভাগত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল, তাৰ পাছত এইটো তৃতীয়টো মৃতদেহ, প্ৰথম ইয়াৰ আগতে এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু আজি দিনটো দ্বিতীয়টো আৰু তৃতীয়টো মৃতদেহ ইতিমধ্যে যি কয়লা খনি আছিল তাৰ পৰা লুৰিয়াই লৈ অহা হৈছে। এনেদৰে দেখিবলৈ পাইছে এই SDRF NDRF আৰ্মি সকলোৱে আসলে যৌথ অভিযান চলাইছিল আৰু তৃতীয়টো মৃতদেহ লৈ অহা হৈছে। আৰু এই মৃতদেহ ইতিমধ্যে যি পুৱা যিটো মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল সেই মৃতদেহক হাফলঙলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে, যিহেতু মুহূৰ্ত পৰীক্ষাৰ কাৰণে তালৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে। পুৱা ভাগত যিটো মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল সেই মৃতদেহৰ ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে। আমি সকলোৱে ইতিমধ্যে DD নিউজৰ দৰ্শকসকলক অৱগত কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে সেই মৃতদেহৰ চিনাক্ত কৰা হৈছে। सबसे पहले तो ये देखो हमारा 6 दिन का मेहनत है। हमने ये टीम वर्क हिसाब से हम काम करके आए हैं। आर्मी है, उसमें नेवी है, और खास करके हम आज अंदर गया था तो पैरा SF का है हम, तो नीचे जाके आज भी हमने नीचे अंदर ड्राइव किया है। ड्राइव करने के बाद आज कम से कम 20 मिनट ड्राइविंग के अंदर 20 मिनट का बाद हमने फिर पाइप में फंसा हुआ एक बॉडी मिला। नीचे का माहौल अभी भी पानी में विजिबिलिटी नील है, लेकिन पानी का डेप्थ लगातार कम होते जा रहा है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, नेवी, असम राइफल और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और हम उनको काम करना चाहते हैं और ऐसे काम करते रहेंगे। उनका सपोर्ट हमारे लिए बेहतर है और हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी पानी खत्म हो जाए और भी आसानी से हम और भी जो भी कोयला है उनको हम लेने की कोशिश करेंगे। 12 मीटर 15 मीटर के आसपास पानी है, तो जैसे ही अभी मोटर लगाई है दोबारा से और बड़ा मोटर भी मंगाया। अगर ये वाटर लेवल जस्ट कम हो जाएगा तो एक बार फिर SF के ड्राइवर जाएगा, दोबारा से एक बार रिकवरी चेक करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम पक्का हेल्प करेंगे सभी का। ठीक है, शुरुआत में कम से कम 100 से 150 फीट के अराउंड पानी था। अभी कुछ लेवल तक कम हुआ है, तो अभी 80-90 के आसपास समथिंग है अभी। तो अभी और धीरे धीरे लगातार पानी कम हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी अभी। আজি এই দুপৰীয়া ইতিমধ্যে এই দুপৰীয়া সময়ত এই উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। অসম আৰক্ষী বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিঙক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰত্যেকটো দিনেই আচলতে ইয়াত যথেষ্ট তৎপৰতাৰে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই হওক, ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই হওক, অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই হওক, প্ৰত্যেকটো দিনেই খুব দুৰ্গম অঞ্চলৰ পৰা DD নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। এয়া ছবি দেখিবলৈ পাইছে। তৃতীয়টো মৃতদেহ ইতিমধ্যে ইয়ালৈ লৈ অহা হৈছে, যি গভীৰ স্থানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু যি পানী আছিল সেই পানী কমাৰ ফলত আচলতে মৃতদেহ এনেদৰে বিচাৰি পাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মানৱৰ সৈতে দেৱাশিষ কাঠকটীয়া, DD নিউজ গুৱাহাটী।